So, a very good evening to everyone present here. It's a Sunday evening, and most of us are very apprehensive about the Monday that's going to come there. But let's have a quick introduction and a nice thing that we're going to talk about today. Scientists believe that our universe is a mathematical place, a logical place where everything exists in equations and numerical calculations. So, it becomes obvious that in order to understand the universe that we live in, we need to have a good grasp over the concepts of mathematics. For that, today, Yoof brings to an EdTech Bootcamp, a math webinar with our mentor, Aparana Tiwari. We welcome you, ma'am, to our webinar. We are thankful for Wacom as well as for supporting us in this venture. Speaking about our mentor today, Miss Aparana Tiwari is a maths educator at Unacademy and ex-Vedantu master's teacher. She has a great history of working in the e-learning industry, skilled in Microsoft Office, public speaking, leadership and management. Aparna is a multi-talented and genius mentor. She completed her education from Amity University, Noida. We welcome you once again, ma'am. And now, without any further ado, I would like you to have this virtual platform and talk to the students. Yeah, so our mentor is here, everyone. Finally. Hello, ma'am. Hope you're doing well. Hi, Sarthak. I'm really sorry for being a little late. Actually, I was facing a bit of technical issues. So, I understand that in this world of entire things being technical and online, we understand the issue. No, not a problem. So yeah, we have already given the audience an introduction about you. And now, without any further ado, ma'am, this platform is yours and the people also. all right. Thank you so much, Sarthak, and really appreciate your, understanding ability. Really, thank you so much. So I'm going to start off now. Welcome everybody. So I hope you people know me. I will give you a very small introduction about me. My name is Aparna. I'm your, mentor for the day, and I'm really happy to come here at this platform for this webinar where we all are going to learn a lot of things, and there are a lot of key takeaways from this session. I'm very thankful to the team that they have given me this opportunity to come forward and talk to you all, and I'm really super excited to take this webinar with you all. So today's session is all about discussing the new ways of learning mathematics and what is maths. In detail, we will be discussing that. As you people know, in this edtech era, in this modern era, we all are at this stage. We need to move forward and know what are the possibilities which may occur in the coming days, and we all need to adopt them, because as soon as we adopt them, we are going to proceed further in life. So changes are definitely going to occur, and what are the changes we are going to face in coming days, we are going to see that. So let's get started with this beautiful session. So आज का session is going to be divided in many parts portion. So first we will be discussing that what is the new approach and what are the best approaches of learning mathematics. So I have been in mathematics. I have been practicing mathematics since long back, and what I have noticed and I have personally seen in my growth area, and I have seen in my colleagues area who are under mathematics only, that there are only two main key pointers which you need to focus on while learning mathematics. So the first one is, everybody knows, that is practice. Practice is the most important key in learning mathematics. प्रैक्टिस क्यों है प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आप उसके डीप में जाते हो, उतना ज्यादा आपको वो खिल के समझ में आता है. अच्छा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी मैथमेटिक्स में, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट. ठीक है, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक इमर्जिंग टीचर हैं, तो आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की. एंड सेकेंड वन कम्स अप एज इमेजिनेशन. अब क्या होता है ना कि आपने कॉन्सेप्ट सीखा, आपने प्रैक्टिस करी, बट आपने इमेजिन नहीं कर पाए उसको. इट्स लाइक वेस्ट.
यू नो द बेटर यू इमेजिन, उसको जितने अच्छे से आप इमेजिन करोगे उतने अच्छे से आपको वो समझ में आएंगी चीजें और उतना आपका स्ट्रांग होगा वो एरिया, ठीक है. एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो वी नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट एंड वी नीड टू ग्रो आवर सेल्फ ऑन टू दैट. इट डजेंट मीन कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, आप इमेजिन कर पा रहे हो तो बस वहीं पे लिमिट हो गया. नहीं, वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट. आपको उसके भी बियॉन्ड जाना चाहिए और जाना पड़ेगा अगर आपको मैथ्स में एक्सेल करना है. टिल डेट अभी अब मैं आज भी अगर मुझे कुछ पढ़ाना होता है, सो आई डू रिसर्च ऑन टू द टॉपिक कि अच्छा इसमें नया तरीका और क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द न्यू वे. It's all about creativity and imagination. It's basically an art, a scientifically proven art, mathematics. The better you create imagination, the better you put forward your imagination. जितना आप personal touch उसमें लेके आओगे उतना ज्यादा आप उसमें निखर के आते हो. That is the first part. अब क्या है, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये चाहिए मैम हम भूल जाते हैं, है ना. सबसे इम्पोर्टेंट आता है बच्चे में, हम कहते हैं हम भूल जाते हैं. इफ यू थिंक सो देन क्विकली गिव मी सम थम्स अप सो दैट आई कैन नो कि हाँ कुछ है बच्चे जो ऐसे हैं जो भूल जाते हैं. कम ऑन, हु ऑल आर देयर जो कहते हैं मैम हम भूल जाते हैं. कम ऑन. अच्छा, so I can see that few are like giving me a thumbs up कि मैम हम भूल जाते हैं. तो बच्चों भूलना is the part of life, ठीक है. आपने कल जो किया, क्या आप उसको एग्जैक्टली बता सकते हो कि आपने कल क्या किया? अगर मैं आपसे पूछूंगी ना, आप मुझे 2 मिनट लगा के सोच के बताओगे आपने क्या खाया और क्या पिया और आपने क्या किया, ठीक है. भले ही आपने वो कल ही किया, वो क्यों होता है? इट्स पार्ट ऑफ टाइम यार, ये हमारा माइंड का प्रोसेस है. So what we have to do is constantly see through. ऐसा लगता है ना, हाय अब हम फिर दोबारा पढ़े उसको, दोबारा इतना टाइम वेस्ट किया हमने. नहीं, इट्स लाइक इन द सबकॉन्शियस माइंड हमें पता होता है कि हमने क्या पढ़ा है. इट्स जस्ट दैट उसको हमें सी थ्रू करना होता है, रिग्रेस नहीं करना है जिस इंटेंसिटी के साथ आपने पहली बार पढ़ा, बट हाँ सी थ्रू करना इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने सी थ्रू कर लिया, रिवाइज कर लिया, इन शॉर्ट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है. तो ये बेस्ट वे है मैथ्स को पढ़ने का. कभी भी लर्न नहीं करना है मैथ्स. मैथ्स इज ऑल अबाउट राइटिंग. द बेटर यू राइट द बेटर यू बिकम. विद दिस आई वांट टू शोकेस दिस पेन इज ऑफ Wacom, and Wacom is really great, make really great products. Like this you can see, this is a pen tab. इसको हम पेन टैब बोलते हैं. ये उनके उनका दिया हुआ पेन होता है, इसी के साथ आता है. It's like if I want to write something, I am an online teacher, so without this I'm handicapped. I can't teach because without writing down maths को ना पढ़ा जा सकता है ना पढ़ाया जा सकता है. So you can check down all the products which Wacom gives. They are really amazing. बहुत ही amazing products होते हैं. तो अभी हम थोड़ा सा फन कर लेते हैं एंड विल डिस्कस मोर डीप ऑन टू इट कि क्या अप्रोचेस है. और आज मैं आपको बहुत सारी नई चीजें बताने वाली हूँ मैथ्स के बारे में, और कुछ कुछ जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं मैथ्स को लेकर के, और उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे. आई हैव एक्सपेरिमेंटेड लॉट ऑफ things under mathematics with my students. So let's start this beautiful thing under which we'll be learning few of the tricks जिसमें हम थोड़ा सा फन करेंगे. तो फन एज इन थोड़े से एक आधे हम ट्रिक सीखेंगे जिससे आपको मजा आएगा, मैथ्स में और इंटरेस्ट आएगा. तो मैथ्स से जितना दूर भागोगे वो उतना तुमसे दूर भागेगी. तो मैथ्स के जितना पास आओगे मैथ्स उतना तुम्हारे पास आएगी. इट्स ऑल अबाउट इट. द मोर यू लव इट, the more you are going to be better in that. तो अब मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, which you all may see that. Just hold on a second. I'm just going to share my screen. Just give me a thumbs up whenever you can see my screen, guys. Okay, just give me a quick thumbs up whenever you guys see that. Just quickly confirm if you all can see the screen which I'm going to show you. Yeah, ma'am. All right, thank you so much, Satak. Okay, so आज हम कुछ ट्रिक सीखेंगे जिसमें हमें बहुत मजा आने वाला है. So let's start with the first trick of the day.
तो पहली ट्रिक जो आज हम सीखने वाले हैं वो है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज मेमोराइजिंग पाई. वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पाई, है ना. पाई इज द मोस्ट प्रोमिनेंट नंबर which we all have in mathematics. तो देखो, अगर मैं कहूँ आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताओ पाई की, so it's a a very big number. You cannot express it, you cannot remember it, but seven numbers are enough to remember, right? है ना. तो सेवन नंबर्स भी लर्न करना टफ हो जाता है. सो देयर इज अ सेंटेंस which is going to help you in memorizing pi up till first seven digits. Okay, clear? So the sentence is going to come up on your screen. That is going to be, how I wish I could calculate pi. Easy, na? How I wish I could calculate pi. How has three letters? I has one. Wish four. I again one. Could, that's five. Then calculate nine and pi two. That's easy. 3.141592. I hope it was very quick and easy trick to remember pi up till seven digits. So you all can just note it down. How I wish I could calculate pi. Actually, that's super easy and easy. Let me just check Q&A. Ma'am, I find it sometimes. I will just check out the Q&A by the end of this webinar. I hope it's fine. ठीक है. By end of the webinar, मैं सारे Q&As इकट्ठा करूंगी और आप सभी के आंसर्स करूंगी. टेंशन ना लो. We all are going to be, in this session together up till everybody's doubts are clear. चलिए. Next thing which is going to come up on your screen is a trick with multiplication of number of series nines. आप सोच रहे होगे यार कि मैथ्स है, कोई जादू थोड़ी है. Actually, it's a magic. Scientific magic. With inculcating art in it. When you inculcate art and science in it, it becomes magic. I'll tell you how. So, multiplication of numbers with a series of nines. Series of nines means there would be 9, 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 like that number. कोई भी number है, and you have to multiply with a series of 9. Take any number. Let's suppose we have taken 654, multiplying with 999. So what you have to do is just subtract 1 from the number which you are multiplying with the series of 9. Here we are taking 654. As you all can see, I'm using Wacom's pen tab to showcase this. 654 is the number. You are multiplying with 999. So subtract 1 from that number. What do you get? 653. Correct. Now take down this number. इस नंबर को अब लो और यहाँ से subtract करो with a series of 9. 653. What are we going to get? 346. Now the answer would be 653346. That's it. बस मिला के लिख देना है आपने. 1 minus, subtract the number which you got as the difference from the series of 9 and जोड़ के लिख दो. बस खत्म. It's like a very easy and easy trick to calculate answer in a second. अभी मैंने बताया है तो आपको just it took 2-3 more seconds. अगर आप practice कर लोगे इसके 4-5 questions की भी, you'll get the hold of it. It's just like कि आप रोज किसी चीज को खाते हो तो अब वो आपकी आदत लग जाती है. तो बस आदत लगा दी है इन ट्रिक्स की. ठीक है. अभी कुछ बच्चे सीख लेते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीख लेते हैं ट्रिक्स बट उसको डेली लाइफ में यूज ही नहीं करेंगे. तो वो भाई भूलोगे ही ना. ठीक है. अब क्या होता है, जैसे मम्मी रोज खाना बनाती है तो उन्हें पता है व्हाट इज द रेसिपी. अब कोई आप में से जाके अभी शौकिया बनाने लग गया एक दिन, तो भाई तुम्हें बहुत टाइम लगेगा वो रेसिपी बनाने में, तुम्हें याद ही नहीं होगी क्या रेसिपी है. सो इट्स लाइक दैट. तो रेसिपी की सारा ही ट्रिक्स होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट ट्रिक विच इज गोइंग टू कम अप ऑन योर स्क्रीन इज दिस. स्क्वायरिंग नंबर विच इज एंडिंग विद 5. तो कोई भी नंबर है वो जो कि 5 से एंड हो रहा है. सो टेक दैट नंबर जैसे 75 हमने लिया यहाँ पर. तो इस 75 में आप यहाँ पर ध्यान से देखो, this number ends with 5. So always remember, any number which ends with 5, the square of that number will end with 25. Simple, right? Now
7 is the number. Now what you have to do is 7 को next successive number से multiply कर दो. After 7 what do you get? 8. बस 5625 is your answer. You can use this trick with any number and you'll get the answer. ठीक है. Next trick, which is very simple. I cross I rule we call it. I cross I rule we call it, because here आप सीधा सीधा multiply करते हो, फिर cross multiply करते हो, फिर सीधा. How? I'll tell you. देखो जैसे 12 multiplied by 34 है, ठीक है. 12 multiplied by 34 है. करना कुछ नहीं है, ये ट्रिक आप हर रोज यूज कर सकते हो. सिर्फ आज आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड ये आपको थ्रू आउट लाइफ काम आएगा. आपको पता है मैथ्स इज नॉट लिमिटेड टू योर ग्रेड मार्क्स. आपको पता है ये बात. मैथ्स इज नॉट एट ऑल लिमिटेड टू योर ग्रेड्स, टू योर परसेंटेज, टू योर कॉलेज लाइफ. नो, इट इज वे बियॉन्ड दैट. अगर आप अपने घर में हो, ठीक है, आप अपने घर में मैथमेटिकल अप्रोच से, लॉजिकल अप्रोच से रहते हो, इट्स वे मोर इजियर. The logical person, the mathematical person is always successful in their life, in personal life as well as professional life. If you are mathematically inclined and logical, you are sorted in life. But if you are going in the different direction, more emotional, non-logical person, तब थोड़ी डिफिकल्टी आती है चीजों को हैंडल करने में. ठीक है, तो मैथ्स को ऐसे समझो कि आपको डे टू डे लाइफ में काम करने वाली चीज है. समझ रहे हो? Yes, like money. You need money to have a beautiful life and fulfill your dreams and needs, right? It's like that. So here you will go to the trick. ऐसा I के जैसा, first we'll start from right hand side. We'll multiply these two numbers in the vertical row. 4 twos are 8. Now we'll cross multiply. 4 ones are 4. 3 twos are 6. Add these two numbers. Okay? Add these two numbers. Now what do we get? 10. It's a 2-digit number, but we'll take only one. We'll choose unit series, of course. Now this 10th digit, that is 1, will be taken down here as a carry forward. Now again, vertical multiply. 3 ones are 3 and plus of 1, that is 4. 408 will be your answer. This is how simple the trick is, and you have to only practice 10 to 12 questions and you're gonna be amazing in that. I hope you people have enjoyed this trick. Just let me know quickly by giving a thumbs up or any of the reaction if you enjoyed this trick. Quick. Yes, enjoyed this trick? Great. Now, being an educator, we need to understand that what is the psychology of kids. If any of you in the attendees are educator or want to be an educator, then you have to understand the psychology of your audience. तो यार अगर आपने उनके ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ ली तो आप बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ा पाओगे. सो आज जैसे हमारी ऑडियंस में मिक्स सेट ऑफ people है. So you can be educator, student or any perceiving educator. तो आज हमारी ऑडियंस के लिए एक और ट्रिक है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय सीरीज ऑफ 1. कुछ नहीं है, जैसे हमारे पास 11 है, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस नंबर, सो इट टेक्स एटलीस्ट 2 minutes to calculate in the traditional way. I'm going to give you the very easy way to calculate it. The number is, let me take yellow color pen, 4223, right? And we have to multiply it by 11 or any series of 11. Always remember, first and last digit will remain same in the answer. ठीक है, अब करना क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना है आपस में. 3 लिख दिया, 3 के बाद यहाँ वाले डिजिट में 2 plus of 3 करेंगे. We are going to get 5, right? Now next consecutive numbers are 2 and 2. Add both of them. What do you get? 4. Next consecutive numbers are 4 and 2. Add both of them. What do you get? 6. So the answer is 4, 6, 4, 5, 3. Simple. Sorted, right? Next. I am sure that you must have enjoyed this trick. Now it's time for you all to have few polls, right? Are you people ready and excited for polls? Are you people ready and excited for the poll? Are you people ready and excited for the poll? Yes? Chalo, theek hai. Let me give you one question. And the question is going to be very easy.
So I'm going to give you this one question. The question is, you have to tell me what is the number we are going to get as a product when we are going to multiply the series of 9 with 582. If you have seen the trick, you must be very much ready and excited with the answer. I'm going to give you the poll and I'm just checking. Just hold on a second. Let me check how do I give it. Okay, I can find the way to give you poll. Just you can calculate your answer and have it on your own. I'm so sorry about it. Now I'm going to take you down to the next very important thing and the very big agenda of the day. That is what are the best ways of learning maths? Coming back to it, we discussed practice, imagination is the most important key. Now, what are the ways through which we can improvise ourselves every day? So, when it comes to mathematics, I have personally experimented with one of my student when I was teaching offline. So while teaching offline, I got to have a student. I'll tell you a very small, brief story about it. So when I was teaching that student was in grade 10th back in 4 5 years. Then I found that the kid is very much afraid of mathematics. There was no phobia because her mother was, a psychiatrist. So, and also she was well educated. So she got to know with many of the counselors and discussed this problem with them. Then I got to know that there was this fear of mathematics within that particular student because of certain reasons. Okay, and the reasons were varied, and consolidating all the reasons, the fear came out. And because of that fear, that kid was failing in mathematics. And in 10th, up till 10th, it's very much mandatory to study maths. So I got to understand the problem, and I saw that the main error is that that kid is afraid of losing marks. Main problem was losing marks because of societal pressure, friends का pressure, school का pressure, और आसपास के सभी लोग इतना फोकस करते हैं ना मार्क्स पे. तो उसकी वजह से उसने कभी मैथ्स की ब्यूटी को देखा ही नहीं. एक्चुअली उसने कभी नहीं इसको नोटिस किया कि हाउ ब्यूटीफुल मैथ्स इज. Then I actually took her to nearby shopping mart. Huh? With your permission, I actually indulge with the personal touch with the student and their parents back in offline teaching. तो उसके पेरेंट्स के साथ से लेकर पूछकर मैं ले गई उसको शॉपिंग मार्ट. And then I asked her to get calculated things with the help of her, formulas and discount and everything. Tell me all of the profits and all of it. And when actually she did tried it, she was having trouble in it. बहुत हासिल किया उसने, बहुत उसको problem भी हुई. But actually when she did it ना, उसको अंदर एक internal satisfaction आया. So that is the most important thing. आप लोगों को ये समझना है how can you use that same concept in your real life. अगर आपने वो समझ के उसको पढ़ा ना, तो आप उसके डीप रूट पे जाओगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे और क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान हो जाएगा. ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल थिंग. इट्स ओनली दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स इट. माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले तो ये मैथ्स का फोबिया हटा दो कि मैथ्स टफ है. मैथ्स आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको लाइफ इजी बनानी है. I have two types of people. I've seen two types of people, mathematical and non-mathematical. जो मैथमेटिकल होते हैं ना, वो लॉजिकल होते हैं हर एक चीज के लिए. वो कोई भी इधर उधर की बात नहीं करते. दे आर वेरी मच पर्टिकुलर टूवर्ड्स इट. ठीक है, तो मैथ्स से डरो मत.
So best approach of learning mathematics is to do it. Apply it in your real life. Imagine it. Okay. So that was the most important thing which I had to discuss today. Now we are going to discuss the next very important, that is ways of using online platforms for education. तो आपको पता है, in this modern era, we all are progressing towards technological education. अब technology में हम अगर बात करते हैं तो it comes up to online platforms where you can learn a lot. अब जो अप्रोचेस आ रही हैं एजुकेशन की वो ट्रेडिशनल से बहुत अलग है. In many of the foreign countries, this approach of homeschool is being started since 4-5 years back rigorously. But in India also we have seen few of the parents doing that. Parents are actually not sending students to the schools. Yes, that's called as homeschooling. In which parents are actually giving them exposure and a bigger exposure and inculcating all the values and all the concepts at home with the help of online platforms. So online platforms are the biggest way of grabbing knowledge. When we are talking about modern and new approaches of learning, online platforms are the best way of learning, because you are the judge to decide what you want to learn and what you want to gain and how much you want to gain. Best part is that online you are going to get more exposure with a better clarity of concept, because you are going to get the best educators, best content and best quality, you know. And when you have a better exposure under your school, when I talk about only school or your college, there is a limited, you know, things which you can learn. आपके पास लिमिटेड एक्सपोजर होता है चीजों को करने का. बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इट्स अ वाइडर रेंज. आपको बहुत दुनिया के अलग अलग कोनों से लोगों को पढ़ाने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है साथ में, और उनकी नॉलेज, आइडियाज, कल्चर्स को आप गेन करते हो. सो इट्स अ बेटर वे, क्योंकि आपको सिर्फ उस स्कूल के बच्चों के साथ तो कॉम्पीट नहीं करना है आगे जाके. When after your 12th you have to face a bigger competition, right? तो आपके पास वो एक्सपोजर होता है, आपके पास वो नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, ताकि आप उनको फेस कर सको. दैट्स द बेस्ट थिंग. अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप कैसे सीख सकते हो, ये एक बहुत ही बड़ा और मेजर एस्पेक्ट है कि समझ नहीं आता कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हम सीखे कैसे. सबसे पहली बात तो आदत पड़ चुकी है हमारी, हमारे हमसे पहले वाले, मेरे से पहले वाली जनरेशन, उनसे पहले वाली, या मेरे से बाद वाली, या आप लोग, हम ये सोचते हैं हमें सिर्फ स्पून फीड कर दिया जाए सब कुछ. वी शुड बी गिवन ऑल द थिंग्स ऑन द प्लेटर. हमें कुछ सोचना ना पड़े, हमें सिर्फ बता दिया जाए. वहीं पे हम लिमिट कर लेते हैं अपनी लर्निंग को. जैसे ही आपने ये सोच लिया ना कि जितना बता दिया गया उतना ही सीखेंगे, वहीं लिमिट हो गया. सो जस्ट लिमिटलेस, यू हैव टू मेक योरसेल्फ लिमिटलेस. आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यू आर हैविंग दिस एक्सपोजर. आई टेल यू वन ऑफ द केस ऑफ माय स्टूडेंट. she was in grade 6. I was teaching in online platform, as you know. So वहां पर मैंने एक बच्चे को पढ़ाया 6th में. While I was teaching her in 6th, during lockdown, she has covered entire syllabus of 6th, entire syllabus of 7th, entire syllabus of 8th, entire syllabus of 9th, 10th, and now she is doing 12th. अभी वो 7th में आ चुकी है, अब वो 12th का syllabus. How? Because she knew that education is not only limited to grades. सिर्फ जिस grade में वो पढ़ रही है उससे limited नहीं है. It is way beyond that, right? It's all about the mindset and approach. She came from a very small town, बहुत ही small town से यूपी के आती है वो, नियर बाय कानपुर, बहुत ही छोटा सा शहर है. एंड उस छोटे से शहर में एक छोटे से घर में रह के वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी नॉलेज बेस को बढ़ा रही है, राइट? इट्स जस्ट दैट हाउ मच वी हैव दिस हंगर ऑफ लर्निंग.
ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, और आगे आने वाले टाइम पे ये और भी ज्यादा लोगों को रियलाइज होगा और भी ज्यादा ये इनकलकेट होगा. द बेटर यू एक्सेप्ट द चेंज, द बेटर यू बिकम. तो अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा दैट यू हैव नो थिंग ऑन द प्लेटर. अब इतना कंपटीशन है, आपको मूव अहेड करने के लिए अपनी अप्रोचेस को चेंज करना पड़ेगा. सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आके सबसे पहले तो आप नए नए आइडियाज को सीख सकते हो, नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो, और अलग अलग तरीकों से सीख सकते हो. मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा अप्रोच दूसरा है, किसी और मैथ्स टीचर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दूसरा होगा. तो आप मेरे से भी पढ़ सकते हो, उनसे भी पढ़ सकते हो. दैट इज द वे वी हैव टू ग्रो आवर माइंड. ये नहीं कि मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है तो मुझे सिर्फ ये सीखना है, नहीं. वी शुड लर्न एवरीथिंग. learning is limitless, knowledge is limitless. We should learn beyond our imagination. ठीक है. So these are the best way. अब मैं आपको बताती हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है अप्रोच अच्छी रखनी है. ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखना है. सिंस मैंने कहा स्पून फीडिंग की आदत है, तो उसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अगर कोई हमें पीछे से बोलने वाला नहीं है, जैसे स्कूल टीचर्स बोलते हैं सिट स्ट्रेट या डोंट टॉक इन द क्लास, डू नॉट गेट अवे, वॉशरूम मत जाओ, पानी मत पियो. सो आपको खुद ही ये मेंटेन करना पड़ेगा इन डिसिप्लिन को इन लर्निंग ऑनलाइन. ऑनलाइन पढ़ने का मतलब है you are going to gain lot of knowledge. ठीक है. So it's all about it. That is how you can learn through online platforms, and you can use many platforms to gain the knowledge. If I wanted, I'll tell you, when I was doing my masters, I have not purchased any of the book set. कोई भी बुक मैंने ऑफलाइन खरीदी नहीं, सिर्फ मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया है, गूगल का यूज किया है, just to learn things and made my own notes. उससे पता है क्या होता है, आपको एक थ्योरी मान लो पढ़नी है. ठीक है, एक थ्योरी मेरे को खत्म करनी है, कोई भी थ्योरी हो सकती है वो, और उसको मैंने पढ़ा ऑनलाइन, एक वेबसाइट पे पढ़ा, एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा, एक टीचर से पढ़ा. आई गॉट टू लर्न फ्रॉम 3 people, 3 ways of and 3 approaches of that particular theory. तो मेरा माइंडसेट बड़ा होगा ना. या फिर सिर्फ मैं एक बुक के ऑथर से पढ़ूं या सिर्फ एक टीचर से पढ़ूं, तो मेरा माइंडसेट तो उसी अप्रोच में बाएगा ना. अगर मैंने 3 लोगों के अप्रोच सीख लिए तो मेरा माइंडसेट 3 अप्रोचेस में काम करेगा, और देन मैं डिसाइड करूंगी कि कौन सा अप्रोच सही है. सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, एंड दैट वाज इट. दैट वाज माय लर्निंग एंड माय प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इट. आई जस्ट वांटेड टू grab upon some of your question and answers, Arthur. Yes. Let me just take down few of the questions from the Q&A. Why is JE means mathematics so difficult to solve? Because the competition is getting higher. आपको पता है, it's all about कि JE मेंस की जो मैथ्स है, it's डीप रूटेड. ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स में, कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द इंटर रिलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. अलग अलग सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के दे मेक अ क्रिएटिव क्वेश्चन. अब मैंने कहा ना, आपको इमेजिन करना है, प्रैक्टिस करनी है. जितना आप इमेजिन करोगे, जितना अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ इमेजिनेशन का मतलब, आई विल टेल यू वन एग्जांपल. बैठे बैठे one day I decided to make one question for my kids. I used to take competitive exams batch. तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन सेट बनाते हैं. तो यार आई डिसाइडेड टू मेक सम डिफरेंट क्वेश्चन. तो मैंने क्या किया, एक ऐसा क्वेश्चन बनाया where there I took one example of watch. मेरे सामने वॉच थी, मैंने कहा कि चल वॉच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है, आई डिसाइडेड टू मेक कि यार अगर हमारी आवर हैंड 30 मिनट्स लेट है, मिनट हैंड 10 सेकेंड फास्टर है, और सेकेंड हैंड 10 मिनट्स फास्ट है, तो एक्चुअली में तीनों हैंड की सुइयां सही टाइम पे कब मिलेंगी. एंड देयर वी गॉट टू अप्रोच different concepts of mathematics onto one question.
यही करते हैं जेई मेंस में। तो इतना इमेजिनेशन आपका तब डेवलप होगा जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है बेटा। जितना आपका कॉन्सेप्ट डीप रूटेड होता है, जितना आपको डीप रूट पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो आपको बहुत हेल्प करता है प्रैक्टिस के टाइम, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व नहीं होता ना, हाई सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। वही हार और जीत का फैसला होता है, वहां आपको छोड़ना नहीं है, वहीं आपको उसको पकड़ के रखना है, और उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपको वो सॉल्व नहीं हो जाए। जिद पकड़नी है, ठीक है। Everything is possible. Next, good evening. What last minute tips for JEE Advanced Mathematics? Beta, the most important thing is that you have to, practice a lot. जितना आप प्रैक्टिस करोगे और डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस करोगे, एक कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं आपने, ठीक है। अब सिर्फ एक ऑथर की बुक फॉलो करने से नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, देन यू गेट अ बेटर अप्रोच। मैम, हाउ वैकॉम कैन हेल्प अस? बेटा, वैकॉम इज जस्ट अ ब्यूटीफुल कंपनी which creates digital tools. Like I have shown you this tab, pen tab, right? I'll show you. This is a pen tab on which we write down. It's like a normal notebook. ठीक है, तो आपको इसके साथ ही पेन मिलता है, like this. Okay. Yeah, along with this, we would like to show a video of how the Wacom tools are like. So if Yeah, you could give us a moment to just present it at this point. that's So great. audience can get it properly. Yeah. Education is changing and driving demand for digital technologies that help enhance student engagement and comprehension, break down silos between subjects, and connect students' learning to real-world needs. At Wacom, we're experts in digital pen and ink technology with nearly 40 years' experience. We know that despite the shift to digital, the role of handwriting in education hasn't changed. Handwriting allows teachers and students to communicate intuitively, using sketches, symbols, and words interchangeably, moving engagement beyond the confines of a keyboard or a video screen. Using digital ink in the classroom can help students and teachers explain complex ideas, collaborate with each other, and assess student comprehension. And with Wacom, your annotations can be saved, shared, and replayed, creating new learning tools for students in and out of their classrooms. Whether you're teaching math, science, or the arts, Wacom combines the freedom and familiarity of working by hand with the convenience of working digitally. With a Wacom digital pen, the handwriting is accurate, drawings are precise, and because our devices are software neutral, students and teachers can use their existing tools for classroom management, lesson preparation, digital whiteboarding, video conferencing, and more. Teachers like Beth Tamanello love Wacom. With my Wacom Intuos, I love the way that I can write on the screen and explain the same way that I would naturally do that on the board in the classroom. Wacom offers pen devices for all education types, levels, and delivery modes. Teacher recommended. Student approved. Remote ready. Visit us online at wacom.com/education. All right. Okay, so I hope you all have seen the video, which showcases all the Digi-tools and how you can optimize it in your life, be it you are an educator or a student. So let me come back to the question and answer page. So here we go. One more question is there from JEE Advanced Maths. Main is how can we learn? Okay, last minute tips. Okay, so I gave you the most important, that you have to stick to the revision part, see through the concept every day. Okay, see through, just see through. Do not go deeper into it like you did in first and the second learning round. See through the concept, stick to the theorems. Very very important, you have to learn that, you have to make sure that you are having the better approach towards learning the formulas and the theorems. Very very important. And if you have not covered the entire syllabus, then you have to actually cover it. आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से. द बेटर यू हैव रिवाइज द कॉन्सेप्ट, द बेटर यू विल एक्चुअली गेन टुवर्ड्स इट. ठीक है.
अब आप लोगों को ना अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत लिमिटेड है, आपके पास सिलेबस बहुत फास्ट है। सो फोकस ऑन द बेस्ट एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, उनको ज्यादा टाइम दो। जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सारे ही सब्जेक्ट्स के, उनको ज्यादा टाइम दो और ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एटलीस्ट अपने दिन का स्लॉट बना के रखो। मॉक टेस्ट पेपर्स को बिल्कुल एकदम जैसे कि रिगरस फॉलो करना है, खाना पीना जैसे डेली रूटीन में आप करते हो, एक भी दिन नहीं छोड़ना मॉक टेस्ट, ठीक है। और जब भी कोई डाउट हो ना, उसको क्लैरिफाई जरूर करना, क्योंकि अगर आपने डाउट्स को अपने क्लियर नहीं किया ना, तो वो वहीं पे रह गया, तो आप एग्जाम में भी वहीं फंसोगे। तो फंसो नहीं, इसलिए अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को क्लियर रखो, स्ट्रेस फ्री रखो। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, उतना आपका माइंड ग्रैब करने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। तो जितना आप पॉजिटिव रहते हो, जितना आप हैप्पी रहते हो, उतना अच्छा है। और इट्स नॉट द एंड थिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड, wherever you are destined to go, you will, nobody can stop. So always be happy. Whatever comes in, face through it. Give your best, and rest is assured for you. Okay? Always remember. And manage your time. बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं, मैम हाउ टू मैनेज टाइम। बट टाइम को आपको मैनेज नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। मैनेजमेंट हम कर सकते हैं ऐसी चीजों का जो हमारे हाथ में है, ठीक है। टाइम तो अपने आप भाग रहा है, आपको इसके हिसाब से ढलना है। आपको ये देखना है कि आपका एक एक सेकंड कहाँ वेस्ट हो रहा है, उन चीजों को लिस्ट डाउन करो जहां वेस्ट हो रहा है, और उसको यूटिलाइज करना शुरू करो। जितना आप मॉनिटर करोगे अपने टाइम को, उतना आप बेटर हो जाओगे, ठीक है। एंड okay, let me take few more questions. Just a second. So what but not enough. Okay, so one of the question is coming up that NCRT is somewhat enough for physics and chemistry up to JEE mains, but maths isn't. Why so? Beta, no partiality. I do agree with this. बहुत सारे subjects हैं, जैसे if I talk about physics and chemistry and other subjects also, NCRT is enough, because in NCRT we have deep rooted the concept. It's all about the written concept. Maths is so vast. अगर एक concept है तो उसके मैंने बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को अगर हम उठा लेते हैं, उसमें हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक क्वेश्चन बना सकते हैं, कंपाइलेशन हो जाता है। तो अगर हम बात करें ना सिर्फ एनसीईआरटी के एक टॉपिक के मैथ्स की, तो इनफ इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो बहुत लिमिट कर देता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें क्यों बुरा मान रहे हो, ठीक है। इट्स देयर अप्रोच ऑफ मेकिंग बुक, और इतनी मोटी बना देंगे तो फिर बच्चे डर जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट इट, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप दूसरे पब्लिशर्स की बुक उठाइए, ठीक है। इंटीग्रेशन इज वेरी लॉन्ग टॉपिक, हाउ टू स्टडी होल ऑफ इट क्विकली। बेटा ये कोई लड्डू थोड़ी है, एक बारी में खा लिया हो गया। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक चाहिए आपको हर चीज की, ठीक है। देखो आपको पहले क्या करना है, पढ़ना है पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से, डीप रूट हो गए आप उसमें, समझ आ गया, अंडरस्टैंड हो गया, तो एक और बार पढ़ डालो, ठीक है। फिर मैंने कहा सी थ्रू करो हर दिन। अब आप मान लो 2 बारी अच्छे से पढ़ चुके हो, फिर आपने 3 हफ्तों का भी गैप दे दिया ना, आप भूलने लग जाते हो यार। हर दिन सी थ्रू करना है। मैंने कहा ना, रिगरस नहीं पढ़ना है मैथ्स को, रिवीजन का पता है, जब मैं छोटी थी ना, मुझे नहीं बताया किसी ने ये, बट मैं आपको बता देती हूँ कि यार रिवीजन इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। जितना हमें लगता है कि रिवीजन करना है इतना बड़ा काम है, कैसे रिवाइज करें, इट जस्ट एट द सी थ्रू करना, ठीक है। रिगरस उसको डीप रूट नहीं जाना है, सी थ्रू तो हम कर ही सकते हैं। अगर आपने सी थ्रू भी कर लिया ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है और वो आपके दिमाग में चलता है। कभी आपने ये नोटिस किया कि आपके एग्जाम में आपको लगता है आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, बट आप जब लिखने लग जाते हो तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आपका आंसर भी आ जाता है। होता होगा डेफिनेटली।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठा होता है, हमें सिर्फ ये फील होता है कि नहीं आता, ठीक है। इट्स जस्ट दैट सी थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, इज मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज अ बेटर अप्रोच और प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस ड्यूरिंग लास्ट मिनट प्रिपरेशन? ओके, गुड क्वेश्चन। जैसे मान लो आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही है, ओनली 10 to 12 days आर लेफ्ट, ठीक है। मैं 1 या 2 दिन वालों की बात नहीं करी, 10 to 12 days आर लेफ्ट, लास्ट के 10 से 12 दिन बचे, बहुत ही क्रूशियल दिन बचे, तो क्या करना चाहिए? मेमोराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप उसे मेमोराइज करोगे तभी आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। सो फर्स्ट मेमोराइज द फॉर्मूले, आप याद कर लो फॉर्मूले, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको उसका डीप मतलब समझ में आता है कि वो कैसे डिराइव हुआ। हर जगह ये एप्लीकेबल है, हर जगह ये एप्लीकेबल है। जितना ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको उतना समझ आता है कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। Students with PCMB often find it difficult to manage mathematics. How to do it judiciously? Okay, I do agree. The syllabus with them, PCMB people, hats off, is very vast. But it's not that you cannot do it. सभी करते हैं जिन्होंने लिया हुआ है ना? तो आप लोगों को ये समझना है कि आपके पास आ चुकी है ये अपॉर्चुनिटी जहां पे आप पीसीएमबी को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब आपने ये मैनेज करना है सब्जेक्ट वाइज कि कैसे हम उसको पढ़ें। स्पेशली मैथमेटिक्स के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको रोज प्रैक्टिस चाहिए, और पीसीएमबी में मैथ्स को रोज प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अपने डेज को डिवाइड करना है, and you have to make sure that in these 7 weeks of day आप 5 days तो मैथ्स कर ही रहे हैं, ठीक है। बहुत 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे देने की जरूरत नहीं है एक ही कॉन्सेप्ट में। आप डेली देंगे, बहुत इनफ है, ठीक है। डेली मैथ्स को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स को चाहिए अटेंशन। ऐसे होते हैं ना कुछ बच्चे जिनको चाहिए होती है भरपूर अटेंशन, ऐसे लोग मिले होंगे आपको लाइफ में कि जिनको अटेंशन बहुत चाहिए होती है, उनको अटेंशन के बिना काम नहीं चलता। मैथ्स इज लाइक दैट। आपने भाव नहीं दिया उसको, अटेंशन नहीं दी, वो आपसे नाराज हो जाएगा। सो यू हैव टू गिव प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स इट। ओके, नेक्स्ट मी टेक द नेक्स्ट how to memorize different formulas in chapters like 3D geometry. But the more you get through it, the more you know how do you have derived the formula. यार फॉर्मूला है, उसको किसी ने तो डिराइव किया होगा ना, और किसी रीजन से किया होगा। तो वही बात है कि आपको डीप रूट जाना है। एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला बनाया गया है, क्यों बना, what was the reason behind it, and how it was developed, and what are the other ways we can derive that formula all through it. It is a lengthy process, short method नहीं है ये, जैसा मैं मेथड बता रही हूँ, बट ये लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करता है। आपको एग्जाम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है ना जो किसी और को नहीं आता, बट आपको आ जाएगा क्योंकि आपने उस अप्रोच से सीखा है। सो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। ओके, permutation and combination is one of my favorite topic to teach and study. Seriously, I'm telling you, permutation and combination is one of the concepts which you can see everywhere in your life. आपकी डे टू डे लाइफ में, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम में, आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम में, आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, हर जगह आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिखता है। तो जितना ज्यादा आप उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करोगे ना, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो मस्ती से पढ़ना सीखो उस चीज को, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को रियल लाइफ से कनेक्ट करो, और उसको रियल लाइफ में फॉर्मूले के थ्रू निकालना सीखो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स के जो क्वेश्चन बुक में लिखे हैं ना, बस वही मैथ्स के अप्रोच है और फॉर्मूले लगाने हैं। नहीं यार, आप अपने खुद के क्वेश्चन बनाओ और खुद से लगाओ, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू हैंडल दैट। ये इसीलिए पता ट्रिकी हो जाता है क्योंकि आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है जहां पे आपने वो बुक्स में फॉर्मूले लगाने हैं। यार अपने खुद के फॉर्मूले बनाओ, अपने खुद की ट्रिक्स और क्वेश्चन सेट बनाओ और वहां पे यूज करो, ठीक है। And let me take a next question. Can
And thank you so much for, okay, ma'am, our programs related to each other. Beta, if I come to, you know, programming and mathematics, of course, it requires mathematical approach. Yes, it is connected. Beta, 22 upon 7 is just the way we have written. But when you are going to actually calculate it in decimals, you're going to get that. Okay. Is it good to let him solve more questions? Is it good to let him solve more and more question? I hope this question is being asked by your teacher. So of course, yes. आपको क्या करना है when we are having actually I believe that I have actually realized this thing. I don't know if it is going to be applicable to you, but I have realized it that the more you set free the student, जितना आप स्टूडेंट को सेट फ्री करते हो, जितना आप टाइम देते हो उसको सीखने का, उतना ज्यादा वो ग्रो करता है. आप सोचो कि आज आपने पढ़ाया और एकदम से उसको आ जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, नहीं सीख पा रहा है, वो गलत है. हर बच्चे का लर्निंग अप्रोच दूसरा होता है. मुझे एक टॉपिक 10 मिनट में समझ आ सकता है, किसी और मेरे जैसे इंसान को वो शायद 10 घंटे भी लग सकते हैं या 10 दिन भी लग सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो वीक है या कुछ. सेट दैट पर्सन फ्री, जितना टाइम लेना है और खुद से सॉल्व करने दो. द मोर दे आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद देयर ओन, द बेटर कॉन्फिडेंस दे विल फील. हाँ, seriously, just trust me on that. What's your experience about teaching maths in offline and online mode? A very good question. So offline mode was a very roller coaster ride, and online was a very totally different ride. So online mathematics teaching is uh, actually way more fun and way more interesting. I'll tell you why. Because you get to have different students coming from different places around the world. आपको अलग अलग बच्चा मिलता है, अलग अलग माइंडसेट का, अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, अलग अलग तरीके से बात करना पड़ता है. So you get to have a bigger exposure. In offline it was very great because you had a personal touch there. आप पर्सनली उनसे कनेक्टेड होते हो. दैट इज अ वेरी बेटर अप्रोच. उसमें भी बहुत मजा आता है. बस इतना ही डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, दैट देयर वाज अ वेरी पर्सनल टच. बस यहाँ एक्सपोजर ज्यादा है एंड ऑनलाइन वाज अ वे मोर फन. How should I continue teaching maths as a teacher? Okay, if you want to be a maths teacher, first you have to understand what are the difficulties students face. जब मैं मैथ्स पढ़ाने का सोचा, देन आई हैड वन थिंग इन माई माइंड दैट आई हैव टू मेक मैथ्स इजीएस्ट फॉर द किड्स. वो डर भगाना है. ठीक है, मुझे पढ़ाना नहीं है उन्हें. nobody can teach anything. Nobody can teach anything to anybody unless and until a student want to learn it or not. अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख ही लोगे. कोई किसी को सिखा नहीं सकता. इट्स जस्ट दैट आपको माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है. तो मेरा सिर्फ ये था कि मैथ्स को इजी बनाना है, ये डर भगाना है, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसा फेस करते हुए. सो ओके, all right. I think the questions are over. Yeah, all the questions are answered. Yeah, thank you so much. Yeah. So definitely, ma'am, this was a very insightful session. I am definitely sure that all the students learned a lot through this entire program that we had today. And your all the tricks, all the ideas that you shared, and the frankness with which you talked about the students, I'm sure that the students loved it.
and I'm really thinking that your students are very lucky who are getting to learn mathematics from you. That's a great thing. The personalized touch that you actually bring to their studies, it's really nice. Math is that subject that students often find very intimidating, and yet it's the most useful subject that we are supposed to learn in our lives. So thank you so much for not just teaching about these tips and tricks, but also giving us new lens to see the entire subject and understand it in a really better manner. We would also like to thank Wacom once again for supporting us in this entire venture. I request the attendees of events, all the educators and other people that are connected with us to check out the products by Wacom on their official website, wacom.com, and their Insta page, Wacom India. Also, lastly, as I said in the beginning as well, don't forget to check out Yoof's website, yoofmag.com, and our Insta page at the rate yoofmag for all the latest events, webinars, competitions, and most importantly, our magazine that comes out every month. Our new issue is all related to the idea of traps, and it's going to come out really soon in the month of September. So, thank you all. Thank you, ma'am, once again for enlightening us with your information. I hope you all have a wonderful day and great week ahead. Thank you so much, Sarthak, and I would like to thank the entire team of you for bringing me here and getting in touch with you all. It was a very nice and a pleasure meeting you all. Thank you so much. Yeah, and I would request the attendees to definitely check out ma'am's Insta profile and other platforms to learn more from her. Okay, don't forget to do that. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you all the attendees. Bye bye. Bye.